Bikes and More present Honda Hornet engine guard installation. Hello friend, welcome back to our channel. My name is Jay and you are watching Bikes and More. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो है Honda Hornet 160R इंजन गार्ड। फाइनली मैंने इंजन गार्ड ढूंढ लिया है, आप देख सकते हो इस वीडियो में, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। For more latest video, please like and subscribe us and don't forget to click on bell icon. और फाइनली मैंने इंजन गार्ड ढूंढ लिया है और ये इंजन गार्ड है Honda X-Blade की। यस, X-Blade की इंजन गार्ड हॉर्नेट में परफेक्टली फिट होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये इंजन गार्ड आपको Honda सर्विस सेंटर में मिल जाएगा, आप सर्विस सेंटर से ऑर्डर कर सकते हो। और इसके साथ आपको ऑल पार्ट्स मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है और बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला पार्ट्स है और ये बैक वाला पार्ट्स है, और ये है आपका इंजन गार्ड पार्ट्स। चलिए इसको जोड़ते हैं और देखते हैं ये कैसे लगते हैं। फर्स्ट जो आपको करना पड़ेगा वो आपका जो लेग गार्ड है उसको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आपका जो लेग गार्ड है वो नहीं चलेगा, तो आपको नया लेग गार्ड खरीदना पड़ेगा। और कौन सा लेग गार्ड आपको खरीदना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा। अभी इंजन गार्ड को जोड़ लीजिए, इसके साथ स्क्रू दिया हुआ है और सारे स्क्रू यूज़ करके इंजन गार्ड को जोड़ लीजिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा पार्ट कहाँ पे जा रहा है, उसका डेमो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 एडजस्टमेंट करना है, देख लीजिए मैं क्या क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट जो है वो आपको जो इंजन गार्ड है उसको थोड़ा काटना पड़ेगा, देख लीजिए, क्योंकि वो साइलेंसर में अटक रहा है, तो इसको काट लीजिए। और सेकेंड एडजस्टमेंट है लेग गार्ड का जो ब्लॉक है उसको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे छोटा 2 होल करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए कहाँ पे क्या होल करना है, आप इस वीडियो में पूरा देख लीजिए।
ये होल आप कैसे भी कर सकते हो, इसके लिए आपको 10 या 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और लास्ट टास्क आपको जो करना पड़ेगा, जो बैक वाला पार्ट्स है उसको काट लीजिए, क्योंकि ये इंजन गार्ड में अटक रहा था, तो मैंने इसको काट लिया है और ये अभी परफेक्टली फिट हो रहा है हॉर्नेट में। और इसमें जो नाट्स वगैरह दिया हुआ है वो जोड़ लीजिए और आपका इंजन गार्ड रेडी है यूज़ करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको और एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे Honda X-Blade इंजन गार्ड की पार्ट्स को अनबॉक्सिंग किया हुआ है और वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा आप पूरा डिटेल्स वहां से देख सकते हो। इसके साथ साथ ही वो वीडियो रिलीज होगा, प्लीज उस वीडियो भी आप देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching our video. If you like this video, please like and subscribe.